Imai Dhamma Dhamma Patipadve Buddham Puje Dhamman Puje Sangham Puje. I worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha by practicing Dhamma in accordance with the teachings. May this humble offering be accepted. चर्चा कर रहे हैं धर्म में प्रगति के बारे में, कैसे हम धर्म में प्रगति कर पाए, क्या फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए, और उस संदर्भ में विभिन्न संज्ञाओं की जो भगवान ने बात की उस पर चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में भगवान ने कई जगह कई सूत्रों में कहा है कि ये संज्ञाएं अगर आप भावित करेंगे, बहुलीकृत करेंगे, so they lead to the death race, they lead to the final liberation. और इनको अगर हम और गंभीरता से देखते हैं तो संज्ञाएं सब प्रज्ञा ही बढ़ाती हैं. बेसिकली दे टेक अस इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आवर प्रज्ञा, एंड ऑब्वियसली हमारा व्यू जो है उसको ठीक करती हैं, सम्मादिष्टि बनाती हैं, एंड देयरफॉर दे नेचुरली वुड लीड अस टू द फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग. तो उस संदर्भ में हम सब्ब लोके अनाभिरति संज्ञा की चर्चा कर रहे हैं. और हमने देखा कि लोक का एक और जो इंटरप्रिटेशन था, सब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस. पहले हमने देखा था कि वर्ल्ड जो सामान्य हमारा भाव है, लोक से 31 लोक, ये मनुष्य लोक, देवलोक, ब्रह्म लोक, पशु लोक और नीचे के निरय लोक. और फिर हमने देखा कि भगवान का एक्चुअली तात्पर्य तो ये है कि जो हमारे एक्सपीरियंस का वर्ल्ड है, क्योंकि हम वर्ल्ड को सिर्फ एक्सपीरियंस के द्वारा ही जान सकते हैं, तो और कोई वर्ल्ड का कोई मतलब ही नहीं है. ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड क्या है, कैसा है, उसको हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जानने के जो माध्यम है वो केवल इंद्रियां ही हैं. तो हमने समझा इस बात को that when Buddha talks of loko, it means the world as experienced through the senses. और इसके कई सारे इम्प्लीकेशन हमने कुछ समझे थे. कल लोक सूत्र पढ़ा जिसमें कहा गया है कि संसार की उत्पत्ति कैसे होती है. नॉट इट मे साउंड लाइक ए डिस्कशन ऑन बिग बैंग, इट्स नॉट दैट. क्योंकि संसार जो है वो हमारा पर्सनल संसार है, सब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच अराइजेस फॉर ईच वन ऑफ अस डिफरेंटली. Objectively, we may say we live in the same world, but subjectively, we all have a different world depending on our sankharas. और जैसे कल लोक सूत्र में सुना था, the world arises due to how do we respond to feelings with tanha, which feelings we respond with tanha, depending on that part of the world arises. और अगर तन्हा निरोध हो जाए तो then भव निरोधा, उपादान निरोधो, भव निरोधा, जाति निरोधो एंड जरा मरण निरोधा. सो दैट इज द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. सो भगवान ने वर्ल्ड को एक्चुअली सफरिंग से रिलेट कर दिया, इसको सिनोनिम्स बना दिया कि वर्ल्ड इज द प्लेस वेयर सफरिंग इज एक्सपीरियंस्ड. सो एंड ऑफ सफरिंग मीन्स एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो ये बात काफी शुरू में हो सकता है बड़ी अटपटी लगे, बट इफ वी डीपली रिफ्लेक्ट विल सी कि हम सब लोग अपने अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, जैसे कहा जाता है. बट इट्स नॉट जस्ट थॉट्स, बिकॉज वी लुक एट द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स. और मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी साइकोलॉजी में, अब इसको रैशमून इफेक्ट कहते हैं. आफ्टर दैट आइकॉनिक फिल्म विच जापानीज फिल्म मेकर मेड रैशमून के नाम से, जिसमें एक ही इवेंट को 4 लोग देख रहे हैं. दे आर ऑल eyewitnesses to that. 3 are the people who are involved in the event. 1 is a bystander जो जा रहा है उधर से and he sees the event, and all 4 give a different account, and they're not doing it to out of deceit. They're doing it what they say truthfully. Whatever they're seen, they're saying it. Not substantial difference in their eyewitness account. So ये अभी legal profession में भी ये बातें समझ में आने लग गई हैं, that we all live in a different world, and depending on the tanha, depending on the cravings, we all respond to this surrounding world in a different way, and our understanding therefore gets changed. हमारे perception उसी हिसाब से बनता रहता है.
जब हमारे को ये बात समझ में आ जाती है, then we realize that this subjective world can arise and pass away. इसीलिए वो कई सूत्र जो हमने सुने हैं, खासतौर पे अजान अमरो बजात उसकी चर्चा करते रहते हैं, तो वो सूत्र फिर ठीक से समझ में आने लगते हैं। अगर हम कोई बात क्लियर हो जाए कि हम एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, भगवान जो लोक की बात कहते हैं, इट इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। जैसे रोहितास सूत्र आपको याद होगा, रोहितास के बारे में जो जिसके मन में ये भाव था कि मैं संसार को चलते चलते पार कर जाऊंगा, और संसार से पार तो जैसे अभी गीता ने पढ़ा, इस शोर को पार करके दूसरे शोर पहुंच जाऊंगा। संसार का तो शोर वही है, जो कि संसार वाला पार्ट तो वही है जिसमें कि जन्म मृत्यु होती है, और संसार जहाँ खत्म हो जाएगा उसके पार तो वही जगह है जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती। तो दैट वाज हिज सिंपलिस्टिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और वो चलता चला गया, और ऑब्वियसली ही कांट फाइंड आउट दैट बिकॉज द world, as the Buddha said, is how does it arise? It arises in senses, six senses. और सिक्स सेंसेस तुम्हारे साथ ही चल रही हैं, आप कहीं भी चले जाइए। So this world will end only when the six senses end. And how will it happen? We will recall प्रतीच्य समुत्पाद। इसमें जो रिवर्स फॉर्मुलेशन है, अविद्यायते वशेष विराग निरोधो संखार निरोध, and then संखार निरोधो विज्ञान निरोध, विज्ञान निरोधो नाम रूप निरोधा, नाम रूप निरोधो षडायतन निरोधा, and षडायतन निरोधा means end of the world. There is no world for that person. So that's what the Buddha finally tells him, that it is in this very fathom long body, that with its perception and intellect, that you will find the arising of world and the cessation of the world, and the path leading to cessation of the world is obviously the eightfold path. और फिर हम कई बार कई सूत्र हम सुनते हैं, शून्यो लोको शून्य, संसार शून्य है। तो ये शून्य क्या है? तो संयुक्त निकाय में 35.85 आता है सूत्र, जिसमें आनंद भगवान से पूछते हैं, ये लोग कहते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? सो हिज रिप्लाइज, शून्यम अत्तेन व अत्तानीय व तस्मा शून्यो लोकोति उच्यते। ये संसार जो है, it is empty of self and of what belongs to the self. And once you look at the world as the subjective world of experience, it is obvious. There is no essence in them. They are all transient phenomena which are rising and passing away. Of course, even the objective world is like that. This subjective world is quite evidently that, which is within our experience. So you can see, it gives further explanation ki eye is empty, form is empty, eye consciousness is empty, eye contact is empty, and whatever feeling arises based on eye contact is whether pleasant or unpleasant or neutral, that is also empty and what belongs to self. And same thing applies to all of our senses. So there's no, कोई सार नहीं है। हिंदी में अच्छे शब्द है, सेल्फ शब्द से काफी कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है। देयर इज नो, संसार में कोई सार नहीं है। ये सब फिनोमेना है, जो प्रोसेसेस हैं जो घट रही हैं। ये कंडीशन होती है, ये प्रोसेस हो जाती है, ये कंडीशन होती है, ये वेदना हो जाती है, ये कंडीशन होती है, इस तरह की वेदना होती है, और ये कंडीशन होती है तो इस तरह की कॉन्शियसनेस जागती है, एंड सो ऑन। सो दे आर ऑल कंडीशन फिनोमेना। देयर इज नो नथिंग सब्सटेंशियल, फिक्स्ड, इम्यूटेबल, जो बदलता नहीं हो, जो अनंत काल तक सेम रहा, एक जैसा रहता हो। इसीलिए संसार को कहा गया कि शून्य है। और यही बात हमने मोगराज के प्रश्नों में पढ़े थे, जो दीप्ति जी ने हमें सुनाए थे कुछ 2-3 महीने पहले, जब परायण वग्गों की चर्चा कर रहे थे। तो मोगराज जी भगवान से पूछते हैं कि किस तरह से हम संसार को देखें, व्हाट शुड बी आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड सो दैट वी कैन ट्रांसेंड डेथ। आई मीन ऑफ कोर्स ही आस्क्ड इन अ पोएटिक मैनर, कथं लोकम अवेक्षन्तं मृत्युराजा न पश्यति। किस तरह से मैं लोक संसार को देखूं ताकि मृत्यु का राजा मुझे देख ही ना पाए, मतलब आई गेट आउट ऑफ हिज रेल्म। मृत्यु का रेल्म जो है वो संसार का आ जाता है, तो संसार के पार चला जाऊं। भगवान का जो उत्तर आता है, शून्य तो लोकम अवेक्षसु मोगराज सदा सतो अत्तानुदिठे मोह्च एवं अच्युतरोसिया। लुक एट द वर्ल्ड एज एम्प्टी, सब्सटेंसलेस, एसेंसलेस, सारहीन है ये संसार। उसको वैसे देखोगे, सदा सत्य सती रहो, सतीमान रहो, और अत्तानुदिठे मोह्च, ताकि ये जो आत्मभाव जो है उसको
त्याग दो तो तुम संसार से पार हो जाओगे. You will be able to transcend you will be go beyond the realm of the king of death, that is Mara's realm, and become to see the deathless. So you can see how in a variety of suttas the same thing is being said in a different manner, that the world is a subjective world of experience, and how do we get out of it is by looking at this subjective experience properly. And if we don't develop tanha in response to the feelings, because feeling तो अपने आप आएंगी, इंद्रियों पे अगर संपर्क होगा, इंद्रियां अगर अपने विषयों से मिलेंगी तो फीलिंग तो जागेंगी, वो तो रुक नहीं सकता. अब उसके आगे अगर अविद्या है तो तृष्णा जागेगी और संसार पैदा हो जाएगा, मैं जाग जाएगा. तो तृष्णा नहीं जागेगी तो मैं नहीं जागेगा, and there will be freedom. So that's the essence of the teaching of the Buddha, put in different words, in another set of formulation. So we can understand this through our own experience. I'll just recite to you a very simple experience. Of course, it's not that end of the world, but when we say end of the world, it means related to tanha or delight. It essentially means with reference to particular all the possible things. So I just give you an example of my own experience about how the world originates and how this world ceases. Very simple one. You see, I go out in the morning for a walk within our society. After morning sitting, थोड़ी देर के बाद, and we walk within the society. हमारे जो सड़क है उसके चारों तरफ घूमते हैं थोड़ा आधा घंटा तक. तो उसमें वहीं पे कार पार्किंग रहती है, तो कारें खड़ी रहती हैं. So normally I just walk around and I'm reflecting on something or walking. So the cars are there or not there, I don't even register it. Of course, I see them, but it doesn't get registered because there's no liking or disliking for the cars. So to say in these words, the world of cars does not exist for me at that moment, for that times. But about 2-3 weeks back, while I was walking, suddenly I noticed a brand new shining car with a wine red color, and it immediately pulled my attention towards that act. And then saw what is this? And I saw written on that Bose. Oh, so it is a Bose sound system. And then the prapancha started in the way which you can easily visualize. So what happened? The form pulled my attention and the world of cars all arose. Not only that, oh, it's much better than others. Seats look so beautiful and it has a much better sound system, and then all kinds of thoughts. So suddenly the world of cars arose. That's how I looked at it. I understood. This is what is meant by origin of the world. And then the importance of SABBA, LOKE, ANABHIRATA Sanya becomes absolutely clear. Because there is a rati towards that color, that's kind of a thing, what this particular sound system, particular color. So the world has become arisen, tanha has arisen. And of course, with due diligence, due mindfulness, it no longer attracts now. After 10 days, even if it is standing, I walk, it doesn't attract the attention because there is no strong tanha arising about it. So what does it want to tell us? In a similar manner, we can relate to other things, the world of people, the world of family, the world of jobs, my colleagues, the world of my meditation colleagues, the world of the trust in which I work, and so on. So you can see how the world arises. If we are established in sati and panya, and there's no craving, there's we are no rati towards the sensory world, sensory attractions, then the world will not arise. We'll just float in the world. It's not that you don't see it or you don't, you get kind of blinded by it, but it just arises and passes away. You're walking around, the sights are happening and it doesn't impact you. You're walking around, sounds are arising and it doesn't impact you because you don't have any liking or disliking towards them. So that's what I understood is when we talk of the SABBA, LOKE and ANABHIRATA Sanya, that's what it means, that we don't have any, the sensory impact is not really
sensory input is not causing any disturbance in the state of the mind. It is not, as Buddha used the word, it doesn't invade the mind. Feelings arise, unpleasant, pleasant, but they don't invade the mind. But once in a while, they do invade the mind and they pull the mind out. And we see how the world originates. Of course, SABBA, LOKE and ANABHIRATA Sanya, and the meaning of LOKE as subjective world can be easily misunderstood. So that's why it's important that we be cautious about it. It doesn't mean that we ignore the conventional reality. Oh, whole world is just a mental construct, so why bother about it? Why bother about anything? Why bother about anybody? Well, that will be again going to the other extreme. One extreme would be the whole world is real and I have to really set it right. Other would be, well, it's mental construct, why bother about it? See, whether it is the car or the family or a monastery, all have to be looked after with sati and panya. But keeping in view the ultimate reality perspective. Don't get trapped in that doing. We shouldn't get trapped in the looking after the car or after the family or monastery or the house. And see it as according to sati and panya. Whatever is necessary, we do. We don't do out of craving. We don't do out of aversion. We don't do things out of aversion. We don't do things out of craving. We don't buy things which are not needed. We don't throw away things because I don't like them, but they may be useful. So that's the kind of understanding I thought we could develop by looking at the SABBA, LOKE and ANABHIRATA Sanya in a dispassionate manner. So we could now practice it and see how it really in the meditation practice till 8:15, we can check how it really goes, whether we can relate to our experiences of the common day-to-day experiences of arising of the world and cessation of the world, how with the rising of tanha, the whole domain of the world arises, and how with cessation, the whole domain ceases for that time period. So stop here, I think it's time to stop.